Welcome all. So, as promised, I had taken this question of natural vibration. The question was asked in GATE 2020, and I would say this is the most beautiful question that has ever been asked in mechanical engineering vibration topic. Because in one single question, if you understand this, आपके at least 20, 20, 30 क्वेश्चंस वाइब्रेशंस के अपने आप हो जाएंगे अगर आपने इस एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से सॉल्व कर लिया. सो मेनी कॉन्सेप्ट्स आर देयर. हाँ, आपको क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखना होगा, डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना होगा. बट या सब ब्यूटीफुल क्वेश्चन. चलिए देखते हैं. एक बार आप वीडियो को पुश करिए और क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एंड देन यू स्टार्ट watching the video. Yeah. So I hope you all have studied the question. Question says we have a disk which is going over a rope, inextensible rope. One side of the rope is having a spring constant K. There is a massless rod attached to the disk at the center. Other end of the rod is fixed on the wall. The rod is massless. एक और spring है of spring constant 2K which is attached to the mid of the rod. ठीक है, ये ओवरऑल क्वेश्चन है. क्वेश्चन हैज आस्क्ड यू टू कैलकुलेट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम. आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए. इस क्वेश्चन का जो मोस्ट फंडामेंटल पॉइंट है पहले वो डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो सपोज आई हैव अ डिस्क. दिस इज द rope. One side of the rope is having spring of spring constant K. अभी सिर्फ इतने क्वेश्चन पे आप फोकस करिए. ठीक है, disk is having mass m and radius r. Disk performs pure rolling over the rope. Pure rolling over. Pure rolling condition exists. Pure rolling condition नहीं होगी तो obviously natural vibration का क्वेश्चन नहीं होगा, because otherwise because of frictional losses energy will be lost. In pure rolling friction is present but still energy loss is not there. That's why pure rolling condition has to satisfy. ठीक है, this side of the rope if you observe is not having any spring. और क्वेश्चन को जब आपने पढ़ा, the question says that the 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 ropes are inextinguishable. आप ropes को बढ़ा नहीं सकते. So in place of rope, if you imagine, मैं और एक simplified तरीका बताता हूँ आपको. आप इनको massless rods imagine करिए. Iron rod, massless rods. ना ये दब सकती हैं. It cannot be pressed. It cannot be stretched. Massless rod. वो गई है डिस्क के चारों ओर. ठीक है, टू सेटिस्फाई प्योर रोलिंग कंडीशन, ये massless रॉड है. दिस इज massless रॉड. एक साइड इसके स्प्रिंग लगी हुई है. सो इफ यू ऑब्जर्व, जिस साइड स्प्रिंग है दैट साइड कैन बी स्ट्रेच्ड बिकॉज स्प्रिंग कैन बी स्ट्रेच्ड. ठीक है, सो अगर मैं 3 पॉइंट लूं, पॉइंट सी, पॉइंट बी और पॉइंट ए, for pure rolling, if the pure rolling condition has to exist, the condition is that there should not be any relative motion at the point of contact of two bodies. Then only there will be pure rolling condition. For example, in a horizontal plane, a disk is performing pure rolling. So the contact point of the disk should have zero relative velocity with respect to ground. So जो contact point है, that cannot move in our case. That means if the disk moves, for example, this perform this kind of oscillation, then point A cannot move
because this is the inextinguishable part. So point A is shared by both the rod. अब मैंने रोप को एक मासलेस रॉड की तरीके ट्रीट किया, इमेजिन करना आसान हो जाएगा, and disk. This point is the contact point between the rod and the disk. It is shared by both rod and disk. Point A cannot go anywhere because rod or the rope, जिसको आप rope कह रहे हैं, मैं उसको rod बोल रहा हूँ. Imagine it as a rod. It will be easy for you. It cannot go anywhere because rod is inextinguishable as per the question. It cannot be stretched. It cannot be compressed. It cannot go anywhere. ठीक है? तो point A and what about point C? भैया जब डिस्क ऑसिलेट करेगा पॉइंट सी विल मूव, बट पॉइंट सी is shared by that portion of the rope or rod where spring exists. So spring can be stretched, so point C can be stretched or it can move. अगर ये बात आप समझ गए, if you understand this, if you understand this, आप इसको इमेजिन कर लीजिए कि भैया ये पूरी रॉड जो है वो वेल्डेड है, किसके साथ? डिस्क के साथ. When disk rotates, this whole system rotates. तो अब अगर point A move नहीं कर सकता, then we can very conveniently assume that this whole disk is hinged with this rope or rod at point A. अपने दिमाग में imagine करिए कि पूरा का पूरा disk is point A, because point A is not moving. Either it is on disk or on rod, it's not going to move. So we can conveniently assume in our mind, हम अपने दिमाग के अंदर ये assume कर सकते हैं कि rod के ऊपर डिस्क जो है वो पिन ज्वाइंट है. So it can now oscillate like this. ठीक है? ये आइडिया अगर आपको हो गया, then this question is very simple and you can very conveniently solve it. ठीक है? तो चलिए अब सॉल्व करते हैं. इस बात को अगर आप समझ गए हैं तो हम आगे बात करेंगे अभी. अब लेते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन. ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या है? ऑलमोस्ट थिंग्स आर सेम. Here you have spring of a spring constant K. This is point C, point B, point A. Here you have a mossless rod, another mossless rod connected at the disk center, and here another spring of spring constant 2K is there. Length and all are given. This is L by 2. This side also L by 2. And R is equals to L by 4. Radius of the disk is R, and that is equals to L by 4 the length of mass rod. इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी अब आपसे पूछी गई है. सो द कॉन्सेप्ट रिमेन सेम कि हम डिस्क को, because the disk is performing pure rolling over the inextinguishable extensible rope, we will imagine that it is being hinged with the rope, not with the massless rod, with the rope. रॉड जो है वो डिस्क सेंटर में कनेक्टेड है पिन जॉइंट के थ्रू, एज पर द क्वेश्चन. ठीक है? सो अब परफॉर्म, जब when things will perform oscillation, what would happen at any particular instant? Suppose the disk has rotated by some angle with respect to point A. With respect to point A, with respect to point A, the disk is performing pure rolling or pure rotation, because we can conveniently imagine that the disk is pin joined with A. So it will perform a pure rotation with respect to the pin joint A. Suppose at this moment the disk has rotated by angle phi. So what about the massless rod?
मासलेस रॉड इस समय कहाँ होगी? वेयर इट शैल बी? द मासलेस रॉड शैल बी समवेयर हियर, समवेयर हियर, बिकॉज डिस्क का सेंटर यहाँ आ गया होगा. So the massless rod, how much rotation massless rod has done at this moment? Suppose that is theta. Okay. So what's the relation between these phi and theta? I can say the amount by which the center of the disk B moves with the same amount the end of the massless rod B moves, because that is the common point shared by both. That is where the rod and the disk are connected. Okay. So in that scenario, I can very well write that the movement done by massless rod, that would be equals to L theta, and that shall be equals to R phi. R phi is the movement done by point B with respect to point A when the disk moves by angle phi. This relation is pretty very important. इस relation को आपको दिमाग में रखना है. When this scenario happened, जब ये हो रहा है, at that time, how much is the compression in this spring? How much it is compressed at this moment? At this moment, it is compressed by L by 2 times theta. Very good. And what about the other spring? This spring. This spring shall be compressed with the same amount by which point C has been moved down. आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, that in natural vibrations the oscillations are of very small amplitude, so this phi and theta are extremely small. That's why we can almost say that point C is moving in almost a straight line. So with respect to point A, when the disk moves by angle phi, the point C shall move by angle 2r phi. This would be 2r phi, and that is the amount by which this particular spring has been stretched. How much? 2r phi. Phi और theta के बीच में relation है already हमारे पास. So now things are almost clear. You just now have to calculate. You can do it the, you know, from now. यहाँ से आप क्वेश्चन को किस मेथड से करना चाहते हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं. Either you want to do it by energy method or you want to do it by न्यूटन्स लॉ. आप किसी भी मेथड से यहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं. एनर्जी मेथड से सभी ने क्वेश्चन किया है, सो मैं ट्राई करता हूँ करना न्यूटन्स लॉ से. ठीक है, चलिए न्यूटन्स लॉ से क्वेश्चन को करते हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपकी पूरी मैकेनिक्स इसमें टेस्ट हो जाएगी. इफ यू डू दिस क्वेश्चन बाय न्यूटन्स लॉ, योर एंटायर मैकेनिक्स विल बी टेस्टेड. और आप तो मैकेनिकल इंजीनियर है, आपकी मैकेनिक्स तो बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो न्यूटन्स लॉ से सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा मैं? I'll make a free body diagram separately for disk and for rod, massless rod. ठीक है, तो अगर मैं massless rod को देखता हूं, this is the rod. It is pin joined here. Here it is having a spring force F, spring force, which is equals to its spring constant 2k times its deflection L by 2 theta, or effectively spring the force will be KL theta. क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है यहाँ तक? आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब इमेजिन, थोड़ा सा इमेजिन करिएगा, when disk moves it will take the massless rod along with it. इसका मतलब at point B where massless rod is connected to the disk will apply a force on it to move along with it. ठीक है, so disk अप्लाई करेगा मासलेस रॉड के एंड पे एक फोर्स एफ बी एट पॉइंट
B. And from Newton's third law, every action has equal and opposite reaction. So अगर मैं अब डिस्क का डायग्राम बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम डिस्क का, so the rod will apply the same amount of force FB on डिस्क. ठीक है. अदर फोर्सेस क्या हैं डिस्क पे? At this end it has an spring force whose magnitude is K times 2R5, and this end point A, point B, point C. अगर आप देखें, what we have imagined कि it is hinged here. So some normal reaction. आप string की tensions लें. अभी मैंने उसको as a hinge imagine किया because of the point of rotation. So it will have a normal reaction N on this side. ठीक है. इधर भी होगी, but that will be balanced by the other normal reaction at B. ठीक है. Because horizontal direction में कोई motion तो डिस्क कर नहीं रही है, तो आप उसको लीजिए ना लीजिए, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं. अब disk is having mass m and disk is having radius r. This rod is my dear massless. ये rod गुरु massless है. Rod अगर massless है, rod cannot have any angular acceleration. Its angular acceleration has to be zero. Because from Newton's law, net moment is equals to I alpha. अगर moment of inertia mass है नहीं, तो moment of inertia zero है. Moment of inertia zero है. Moment of inertia zero है. तो net moment has to be zero. Net moment has to be zero. ठीक है? Because I tends to zero. अगर I tends to zero है, if I tends to zero क्या? I तो zero ही है. What should I say? एक second. रीजर क्या कहना चाह रहा हूं मैं, फिर से हम डिस्कस करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को समझना है. ठीक है. रॉड मेरी मासलेस है. फ्रॉम न्यूटन्स लॉ वी नो नेट मोमेंट इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. अगर रॉड मासलेस है या बॉडी मासलेस है, आई विल बी जीरो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी जीरो. ठीक है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी जीरो. So if you have any net finite moment, then alpha tends to infinity. Zero क्यों लिखा है? Then alpha tends to infinity. अगर I zero है और you have net moment in the system, alpha tends to infinity. That is not possible. इसका simple interpretation है कि एक massless body में net moment has to be zero. That's it. ठीक है. So इस body में net moment zero होना चाहिए. If that is true, I can say FB times L is equals to KL theta times L by 2. तो यहाँ से मुझे FB की वैल्यू मिल गई. FB equals to 1L cancel. FB equals to KL theta by FB का वैल्यू आ गया मेरे पास. ठीक है. चलिए, तो अब डिस्क पे आते हैं. Let's move toward the disk. डिस्क का फ्री बॉडी डायग्राम एक बार फिर से बनाइए. Here it was having force FB by rod. Here it is having spring force K times 2R phi, and R phi is equals to L theta, so I can write it 2K L theta. FB का वैल्यू आपने KL theta by 2 ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है. यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन N, और मेरा होल डिस्क is performing pure rotation with respect to this point C. At this moment, its angular displacement is phi, angular velocity phi dot, angular acceleration phi double dot. थीटा रॉड का था.
इसका फाई है, ठीक है। So let's now write the Newton's law again. Net moment is equals to moment of inertia with respect to point of rotation times phi double dot, simple, I alpha, angular acceleration. Right now, all the parameters we have taken clockwise, phi dot, phi double dot. If you observe, if we take the net moment about point C, normal reaction will not give any moment. So the moment given by only Fb and this spring force K 2r phi or K dual theta. Okay. Let's put it and then see what is happening. So net moment given by Fb and the spring force shall be anticlockwise, and the direction we have chosen for our phi dot, phi double dot are clockwise. Okay. So in that scenario, I can write it anticlockwise moments with minus sign, minus Fb times r plus 2k L theta spring force times 2r equals to moment of inertia of the disk with respect to point C, that is 3 by 2 mr square times phi dot, since L theta is equals to r phi हमने already किया है, so phi is equals to L theta by r, phi dot shall be L by r theta dot, and phi double dot shall be L by r theta double dot. So everything will convert into theta, and then we can write it phi dot as L by r times theta double dot. Very simple. Differentiate किया, L theta equals to r phi, differentiate किया, theta dot phi dot comes as L by r theta dot, double differentiate किया फिर से, phi double dot comes L by r theta double dot. बस अभी इस इक्वेशन में आपको सॉल्व करना है, you will get the equation of motion. Question is solved and done, dusted. ठीक है. So let's see. Minus FB value we already calculated. That value was KL theta by 2. KL theta R by 2 plus 4KL theta R equals to 1 R will cancel out, 3 by 2 M R L theta double dot. ठीक है, बस इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, so what common can we take? RL by 2, RL by 2 is also here, so RL by 2 will cancel out, minus RL by 2 we have taken common, so it will become K theta plus RL by 2, here only RL is there, so 2 has to be multiplied, so 8 KL theta, here also L comes, KL theta, no, R gone, R and L are gone, so 8K theta equals to 3M theta double dot. Let's simplify it. 3M theta double dot plus 9K theta equals to 0, or theta double dot plus 3K by M theta equals to 0, or from here omega n equals to, or omega n square equals to under root 3K by M, sorry, omega n equals to omega n square. If I writing, then I don't need to write under root. Okay, almost done. Omega n square is equals to 3K by M, or natural frequency omega n is equals to root 3K by M. Okay, this would be your answer. मैंने इसको
डेलिबरेटली न्यूटन्स लॉ से सॉल्व किया है, बिकॉज एनर्जी मेथड से तो सभी लोगों ने सॉल्व किया ही होगा। ठीक है, आई होप आई हैव जस्टिफाइड दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। इससे आपकी मैकेनिक्स के भी फंडे रिवाइज हो गए। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट। सो एनर्जी मेथड से तो सभी ने किया, जैसा मैंने कहा। बाद में न्यूटन्स लॉ से करना एक चैलेंजिंग काम था, और वो हमने अभी करके देखा। इससे आपके जो बेसिक मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी रिफ्रेश हो जाएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक होमवर्क एट द एंड देख के जाऊंगा, जो कंडीशन है कि आपको करना न्यूटन्स लॉ से है। ठीक है, एग्जाम में आप किसी भी मेथड से करिए, आंसर लेके आइए, बट अभी जो मैं दे रहा हूँ दैट क्वेश्चन शुड बी सॉल्व बाय न्यूटन्स लॉ। ठीक है, एक मासलेस रॉड है, सेम कॉन्सेप्ट लगाइएगा। Massless rod. This rod is massless. Here you have spring. Here you have a point mass m. You have another spring here. इसको भी k ले लीजिए, इसको भी k ले लीजिए. This total length is L. This length is L by 2. आपने सभी ने ये static deflection method से किया होगा, I know. लेकिन this rod is massless. Condition यही है, you have to solve it by Newton's law. No energy method, no static deflection method. If you really want to brush up your concepts, you solve this particular question, and to verify it or to cross check, already you have answers. I mean, in every book this question has been given, but everywhere it has been solved by static deflection method or energy method. But you try it by Newton's law. और अगर आपको मुझसे शेयर करना है, सो यू कैन व्हाट्सएप मी, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ। आप अपना सोल्यूशन मुझे इस नंबर पे जरूर भेजिएगा, 9481369058। इट्स 3। आप इस पे मुझे अपना सोल्यूशन भेजिए, एंड कंडीशन इज न्यूटन्स लॉ से सॉल्व करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को न्यूटन लॉ से सॉल्व करिए, बहुत कुछ सीखेंगे आप इस क्वेश्चन में। यू विल सी मेनी थिंग्स। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। ठीक है, एंड आई प्रॉमिस कि अभी तक इस क्वेश्चन को आपने कहीं भी न्यूटन्स लॉ से सॉल्व होते नहीं देखा होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपका मैराथन सेशन टॉम का आने वाला है बाय कुलकर्णी सर, सो यू मस्ट ज्वाइन। मैं खुद ज्वाइन करूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे पढ़ना। एंड बी यू नो डोंट थिंक मच अबाउट एग्जाम। आराम से रहिए, कूल रहिए, प्रिपरेशन करिए। ऑल द बेस्ट।